Okay, in the previous lecture, we discussed the physiology of HCl production. Okay, that how HCl is going to be produced in the parietal cells of stomach. Okay, now today we will discuss the as in the previous lecture I told you people there is a balance between. Listen and remember, there is a balance between the HCl production and its protective mechanisms. And today we will see what are those protective protective mechanisms those are going to counter the HCl response. ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि HCl की जो प्रोडक्शन है उसको कम करते हैं. ठीक है. ओके. प्रोटेक्टिव फैक्टर्स. प्रोटेक्टिव फैक्टर्स. ओके. अब हमने इसमें देखना है कि कौन कौन से वो प्रोटेक्टिव जो है ना फैक्टर्स हैं. सबसे पहला फैक्टर, first factor. The first factor is somatostatin. The first factor is somatostatin. Somatostatin. SST. Okay. Somatostatin का क्या रोल है? What is the role of somatostatin here? What somatostatin is going to do with HCl production? Okay. Somatostatin is uh, associated with decrease, listen, decrease gastrin gastrin release. That gastrin is responsible for increase of the HCl production, but here somatostatin is going to counter that HCl production increase or increase in the HCl production, right? मतलब ये हुआ कि somatostatin जो है, अभी हम देखते हैं रिलीज कहाँ से होते हैं. somatostatin जो है वो गैस्ट्रिन रिलीज को कम करता है. इट्स मीन दैट कि अगर somatostatin का लेवल ज्यादा होगा तो वो गैस्ट्रिन के लेवल को कम कर देगा, जिसकी वजह से एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगी. तो दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. नेक्स्ट नेक्स्ट इज decrease histamine release. ठीक है. As you people know that gastrin is going to be released from the antral G cells, antral G cells, and you people know that histamine is going to be released from ECL cells, enterochromaffin-like cells, and both these chemicals, gastrin and histamine, are associated with HCl production or increases the level of HCl. Okay. The next is direct inhibition of HCl. क्या है? Direct inhibition of HCl. Okay. Listen and remember. This somatostatin is going to be released from antral D cells. From antral D cells. Let's suppose, for example, as you people know that here is stomach.
Okay, somewhere here the antral D cells, antral D cells. Okay, okay, यहाँ पे कहीं पे है suppose antral D cells. From here, the somatostatin has been released here, and it will come over here on the different type of cells. And the name of cells are G cells and enterochromaffin-like cells. Okay, as you people know that. Let's suppose, for example, here is the G cells responsible for gastrin release. Gastrin release. ओके, यहाँ से आया ये somatostatin, और इसने यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे इसने अब मौजूद अपने इसके जो रिसेप्टर होते हैं, जी प्रोटीन रिसेप्टर, उनके ज़रिए से इसने गैस्ट्रिन रिलीज को कम कर दिया। क्या किया? डिक्रीज गैस्ट्रिन रिलीज, बिकॉज इसके जो रिसेप्टर होते हैं सोमैटोस्टैटिन के जी सेल्स के ऊपर, वो जी आई होते हैं। वो कौन से होते हैं? जी आई रिसेप्टर होते हैं इसके, राइट? ओके, जस्ट लाइक दिस, here are the HCL cells. Here are the HCL cells और इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स, उसके ऊपर भी इसके रिसेप्टर हैं, एंड दी रिसेप्टर आर जी आई और एस एस टी receptors. Okay, next. So this is the first factor that is associated with the decrease of HCl production. ठीक है, आपको पता है गैस्ट्रिन और जो इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स हैं उनसे गैस्ट्रिन और हिस्टामिन रिस्पेक्टिवली रिलीज होते हैं, जो कि एसिड की प्रोडक्शन को कम करते हैं। तो उनके ऊपर नेगेटिव इनहिबिटरी इफेक्ट किसका है? सोमैटोस्टैटिन का। इट्स मीन दैट व्हेन somatostatin level gets raised, it is going to decrease the level of gastrin and uh, histamine from their respective cells like G cells and enterochromaffin like cells. Next, point number two is prostaglandins. Point number two is prostaglandins. Okay, right? And here there are two types of prostaglandins. Okay, prostaglandin E2 and prostaglandin I2. Prostaglandin E2 and prostaglandin I2. And what is the function of these prostaglandins? These prostaglandins are responsible for uh, increase the secretion of HCO3 negative. ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? बाइकार्बोनेट आयंस के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। एज यू पीपल नो दैट bicarbonate are the counter ions of HCl. Definitely, HCl is an acid and bicarbonates basic are basic in nature. So when there is acid and base reaction, definitely there is a neutralization reaction. HCl will be neutralized. ठीक है, तो अगर किसी वजह से बाइकार्बोनेट आयंस की सिक्रीशन को हम बढ़ा दें या ज़्यादा हो जाए बाइकार्बोनेट आयंस की ये सिक्रीशन, तो क्या होगा? HCl की वो जो
प्रेजेंस है उसको हम नलीफाई कर सकते हैं. वी कैन नलीफाई द HCl presence over there by increasing the production of the bicarbonate ions. Okay. Next is increase mucus production. Mucus. Mucus production. Okay, right. अब क्या होता है? Listen. अब क्या होता है? Suppose we can say that this is your stomach. Okay. ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं वो क्या होती हैं? जो भी कोई सेल होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं. क्या होता है? कोई भी सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन. लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल इट इज एनी सेल ऑफ द स्टमक. ठीक है. इज एनी अदर सेल एंड फ्रॉम हियर देयर आर lipids and especially the phospholipids in the cell membrane. Okay. In the cell membrane, the phospholipids are going to be broken down into their constituents, and one of the constituent is prostaglandins. Okay, right? Prostaglandins बन चुके हैं यहाँ पे. और इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की दो टाइप्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन E2. राइट. ओके. अब क्या होगा? नो, ये हमारे पास parietal cells हैं. राइट. इन parietal cells के ऊपर, नो हियर ऑन these parietal cells, listen and remember very important point. Let's suppose here is the receptor. Okay. And the name for receptor is EP3 receptor. Right? जिस तरह डिफरेंट केमिकल्स के रिसेप्टर होते हैं उसी तरह प्रोस्टाग्लैंडिन्स के जो रिसेप्टर होते हैं उनकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं. फॉर एग्जांपल EP1, EP4, EP3, EP2, etc. etc. So in case of stomach, there are EP3 receptor present on the parietal cells, and these EP3 receptor are going to decrease HCl production, and these receptor are G inhibitory in nature. So if they are G inhibitory, they are going to decrease the adenylyl cyclase, and adenylyl cyclase level will be low, or definitely decrease cyclic AMP level and decrease pKa level. Definitely this pKa, in the previous lecture, I told you people here this pKa is going to increase the insertion of these hydrogen potassium pump into the luminal side. So when this pKa will be inhibited by prostaglandins, right? EP3 receptor 1 will be activated by prostaglandins E2 and I2. So there is decrease pKa level. So when there is pKa less or the low pKa level, then there is less phosphorylation of those vesicular uh, hydrogen potassium pump. So when there is less phosphorylation, there is less insertion of that pump into the luminal side. So, right, this is the luminal side. Luminal side. So when there is less insertion of these pumps in the layer, there will be less production of HCl, and it is because of prostaglandins. Okay. अब ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, प्रोस्टाग्लैंडिन, सोमैटोस्टैटिन. ठीक है. एंड म्यूकस प्रोडक्शन. So this is the mechanism how prostaglandins are going to uh, counter the HCl production, or how
prostaglandin are going to neutralize the HCL function or nullify HCL function. ओके, दो मैकेनिज्म है, ठीक है। एक तो, बल्कि तीन मैकेनिज्म है, बल्कि तीन मैकेनिज्म है। डिक्रीज HCL प्रोडक्शन, राइट, तीन मैकेनिज्म है, ठीक है। एक तो ये है कि इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, जितने बाइकार्बोनेट आयंस ज़्यादा होंगे उतने HCl के साथ वो रिएक्ट करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, HCl नलिफाई होगा। दूसरा, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। ओके, अच्छा, ये म्यूकस क्या होता है बेसिकली? म्यूकस इज बेसिकली हाइड्रोफोबिक ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। क्या होती है? हाइड्रोफोबिक ग्लाइकोप्रोटीन्स, and these hydrophobic glycoproteins are going to form a layer uh, around the whole stomach wall, ठीक है। जो स्टमक की वॉल होती है उस पूरे को ये क्या कर लेते हैं, घेर लेता है, ताकि HCl जहाँ जहाँ पे भी होगा वो उसको जो है ना वो प्रोटेक्ट करेगा HCl से। क्या? म्यूकस। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, ये HCl है, ये है ना स्टमक, लेट्स सपोज, ठीक है। तो क्या होगा, जो ये म्यूकस होता है ये इस तरह जो स्टमक की वॉल्स होती हैं उसके ऊपर जो है ना लेयर बना लेते हैं इस तरह करके, जस्ट लाइक दिस, एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम द HCl डाइजेशन, ठीक है, राइट। ओके, so this is the role of somatostatin and prostaglandin in the neutralization of HCl. Means that these are the protective mechanisms. We are going to protect the stomach from damage of HCl released by the parietal cells. Okay, एक और चीज़ है। अब ये तो listen. uh, as you people remember in our first lecture of physiology, in which I told you people the epithelial cells, and you people know that epithelial cells are responsible for secretion and absorption of different chemicals. Okay, so these are those epithelial cells. Yes, those epithelial cells. Epithelial cells, or we can say that surface or superficial or surface epithelial cells. Means that these cells are present on the आउटर सरफेस, ठीक है। आउटर सरफेस मीन्स के कुछ सेल्स होते हैं ना जो अंदर होते हैं डीप, ठीक है, और कुछ होती है सेल्स सरफेस सरफेस के ऊपर इस तरह, तो ये उनमें से है, ठीक है। ये क्या करते हैं, these cells are also associated with mucus, mucus production, mucus production, and increases HCO3 negative secretions. Okay, right? Okay, listen. एक और चीज, listen and remember. In case of prostaglandins, prostaglandins have another effect, that is increase blood flow, increase blood flow towards stomach. जो ब्लड वेसल्स स्टमक को ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं ये उनकी तरफ ब्लड को बढ़ा देती हैं। फिर क्या होता है, आपको पता है ना, HCl बन गया। अब क्या होता है कि कुछ ना कुछ जो है ना HCl जो है ना वो वेनस सिस्टम के जरिए ड्रेन भी हो जाता है, वहां से निकल भी जाता है,
ठीक है, जितना ज़्यादा ब्लड आएगा उतना ज़्यादा ड्रेन होगा क्या, एचसीएल, और उसकी जो है ना वहाँ से रिमूवल होती है। और दूसरा ये है कि जो ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है ये बाइकार्बोनेट आयंस को भी अपने अंदर लेकर आता है। एज यू पीपल नो दैट हमारे ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, दोज आर कमिंग फ्रॉम द आरबीसीज। ठीक है, कि कुछ जो है वो आपकी CO2 की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में होती है, तो कुछ बाइकार्बोनेट आयंस ब्लड में भी होते हैं डेफिनेटली। सम ऑफ द बाइकार्बोनेट्स आर देयर व्हेन देयर इज इंक्रीज ब्लड फ्लो टुवर्ड्स दिस stomach area. So definitely when there is more and more blood, then there is more and more bicarbonates ion secretions there because of prostaglandins. So there is lot of role here regarding prostaglandins। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि HCl की प्रोडक्शन और उसके जो प्रोडक्टिव मैकेनिज्म्स हैं उनके अंदर इस एक बैलेंस होता है। नॉर्मल फिजियोलॉजी, इन नॉर्मल फिजियोलॉजी देयर इज अ बैलेंस बिटवीन the HCl production and its neutralization. So from one of these two mechanics, either HCl production becomes increased or there is less protective mechanics। ठीक है, अगर क्या होता है कि आपकी HCl की प्रोडक्शन बढ़ जाती है या आपके जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो काम हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपको अल्सर हो सकता है। ठीक है, अभी हमने ये थोड़ा बहुत इसकी फिजियोलॉजी को डिस्कस किया अभी तक टिल